Here we talked about a wired scenario. We connected multiple machines through a single wire. इसके बाद हमने देखा कि signal generated by any machine on a wired scenario was actually easily readable by all the machines on the network. CSMA will work. अगर हम wireless environment की बात करते हैं तो these machines are mobile machines. They are free to move anywhere. हो सकता है कुछ देर के बाद मशीन A जो है it may move here. हो सकता है कुछ देर के बाद मशीन B जो है it may move here. ऐसे ही मशीन C जो है it may move somewhere else. तो mobility creates some problems. एक common problem जो मोबिलिटी की वजह से इंटेंसिफाई हो जाता है लेकिन ऑलरेडी मेरे वायरलेस मीडियम में मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं हिडन नोड प्रॉब्लम. इस पर्टिकुलर केस में देखें, सिग्नल जनरेटेड बाय होस्ट A was easily readable by host B. लेट्स से ये ग्राफ मेरी सिग्नल इंटेंसिटी शो कर रहा है, ठीक है. देयर इज सर्टेन थ्रेशोल्ड जिससे अगर ऊपर सिग्नल का लेवल है, मे बी दिस लाइन इज द थ्रेशोल्ड, एनी सिग्नल एनर्जी रिसीव्ड अबव और हायर देन दिस थ्रेशोल्ड, आई वुड से कि ये एक बिल्कुल वैलिड सिग्नल था, रिसीवेबल था, हम इसको वैलिड कम्युनिकेशन अज्यूम कर सकते हैं. नाउ लेट्स सपोज दिस रेड लाइन इज द सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय होस्ट A. Host A generates some transmission here, some packet here, some signal here. This can easily be detected by host B. लेकिन जैसे जैसे ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है away from host A, there will come a time when this signal starts attenuating. ये weaker होना शुरू हो जाता है. At host C, मशीन C जो है सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी. ये बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एक बात कर रहा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द एक सर्टन रेडियस में वो बिल्कुल ऑडिबल है, वो एक क्लियर वॉइस है. उस रेडियस से जैसे जैसे हम दूर जाना शुरू होंगे तो कोई एनर्जी आपको उस फ्रीक्वेंसी पे सुनाई नहीं दे रही होगी, ठीक है. तो वी कैन से कि वो जो सिग्नल था वो फेड होना शुरू हो गया, वो वहां पे रीडेबल नहीं है, डिटेक्टेबल नहीं है. सो एनी ट्रांसमिशन मेड बाय होस्ट A is actually not readable by host C. Any transmission made by host C is actually not readable by host A. So we can say that host A and host C are actually hidden for each other. They cannot understand, they cannot hear each other's transmissions. Station B जो है, this station lies somewhere in between host A and C. Station B can actually read transmissions from both host A and host C. अब let's suppose there is a situation where station A was transmitting some data to station B. At the same time, station C ने अब जब carrier sensing की है तो it will find out कि यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही क्योंकि A का सिग्नल जो है वो C तक आ ही नहीं रहा. So station C will also start transmitting data. Now transmission from station C will cause interference at station B. We call this problem as a hidden node problem or a hidden terminal problem. ये distances की वजह से भी हो सकता है, ये आपकी कुछ आने वाली ऑब्स्टेकल की वजह से भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल स्टेशन A एंड स्टेशन C वर हिडन फ्रॉम ईच अदर बिकॉज उनके दरमियान में कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसी चीज मौजूद थी which actually was not allowing the signals to penetrate through this area. So A और C जो थे they were not able to hear to each other's transmissions. Station B was easily able to hear transmissions from both of them. So if station A was transmitting some data, B was listening or receiving that data. अब अगर C कैरियर सेंसिंग परफॉर्म करता है तो कैरियर सेंसिंग सिंपली फेल हो जाएगी. अगर कैरियर सेंसिंग फेल हो जाएगी तो स्टेशन C विल सिंपली स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डेटा. अब जब स्टेशन C ट्रांसमिट करेगा तो इट विल कॉज इंटरफेरेंस एट स्टेशन B. इस चीज को हम स्टेट कर सकते हैं सेंसिंग जो है दैट इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द सेंडर और क्लूजन जो है that usually occurs at the receiver. So carrier sensing is actually not a right solution to avoid collisions. उसकी वजह ये है कि carrier sensing perform sender ने की है लेकिन collision तो receiver पे आनी थी. Receiver carrier sensing perform नहीं कर रहा. तो इन wireless networks हम ये दोनों काम करने की कोशिश करते हैं. हम आगे जाके देखेंगे कि हम receiver से carrier sensing कैसे perform करवा सकते हैं अभी कुछ देर में. Another thing we do is कि हम वायरलेस मीडियम में आने वाले कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करें. वन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स वाज हिडन टर्मिनल. एक और प्रॉब्लम भी वायरलेस मीडियम में आता है
सिंस आप ट्रांसमिशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम अदर ट्रांसमीटर्स, क्योंकि आपका जो रिसीवर होता है वो उस सिग्नल को सुन पा रहा होता है, तो आपकी कैरियर सेंसिंग उस तरह से सक्सेसफुल नहीं है. सो देयर इज ऑलवेज सम चांस कि आपके मल्टीपल सेंडर्स कोलाइड कर जाएं एट ईच अदर. इफ आई मे बी ट्राई राइटिंग डाउन these problems here. This is one problem. Hidden node. I had three machines, A, B, and C. Signal transmitted by A was not audible at C. Signal transmitted at C was not actually readable at A. So they are hidden for each other, but they do cause interference at B. अगर A transmit कर रहा था and at the same moment station C also starts transmitting data, it will cause interference at station B. Similarly, station C was transmitting and station A start transmitting data, it will cause interference at station B. There is one more problem, that is collision detection. Collision detection is easily doable in wired networks. In wireless networks, collision detection is not possible. There are certain reasons. The foremost reason is that when station A is transmitting some data, its own transmissions cause some variable noise at the receiver, station A's own receiver. So कोई भी स्टेशन जब ट्रांसमिट कर रहा होता है उसकी अपनी ट्रांसमीटर, उसकी अपनी ट्रांसमिशन की वजह से उसके ट्रांसीवर पे या उसके रिसीवर पे जो इंटरफेरेंस आ रही होती है, दैट इज अ वेरिएबल इंटरफेरेंस. हम उसको कैंसिल नहीं कर पाते. हम कैंसिल नहीं कर पाते तो वी कैन नॉट टेल कि अगर कोई क्लूजन आ गई है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. सो क्लूजन डिटेक्शन वायरलेस नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है. हिडन नोड का प्रॉब्लम जो है दैट इज आल्सो देयर. सो अगर ये दोनों प्रॉब्लम हैं तो इन वायरलेस नेटवर्क्स वी डोंट ट्राई टू डिटेक्ट क्लूजन, we actually try to avoid collision. That is why whenever we talk about Ethernet card, we talk about CSMA CD. And whenever we talk about wireless communication interfaces, for example, Wi-Fi, we always talk about CSMA CA. 802.3 family, which belongs to Ethernet actually, which Ethernet belongs to actually, that deals with CSMA CD. 802.11 फैमिली जो मेरे वायरलेस मीडियम्स के लिए रिजर्व्ड है, देयर वी परफॉर्म CSMA CA. फर्क क्या है क्लूजन डिटेक्शन और क्लूजन अवॉइडेंस के अंदर? क्लूजन डिटेक्शन में अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप, किसी भी स्टेशन को, स्टेशन ए को लेट्स से कुछ डेटा मिलता है तो इट सेंसेस द चैनल, कैरियर सेंसिंग करता है. इफ चैनल इज आइडल इट ट्रांसमिट्स द डेटा. If channel is busy, it waits and it transmits the data once the channel goes idle. अब CSMA CD में हमने एक डिस्कशन की थी. लेट्स से हम क्लास में कोई बात कर रहे हैं, क्लूजन आने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जब मैं बात करके रुकूंगा, देयर मे बी मल्टीपल स्टूडेंट्स हु वांट टू आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है, दैट इज द टाइम वेयर वी कैन सी मोर एंड मोर क्लूजन्स. क्लूजन अवॉइडेंस कहती है कि उस टाइम को हम रैंडमाइज कर दें. CSMA CA में आप कैरियर सेंसिंग करेंगे. If channel is idle, you can do the transmission. If channel is busy, you can wait as you were doing in CSMA. लेकिन अब जब चैनल बिजी होके आइडल होगा तो you will not immediately start transmitting. You will do a random wait, randomization. जो Backoff का मैकेनिज्म CSMA CD में हमने यूज किया था, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर मैकेनिज्म हम यहाँ पे यूज करेंगे. अगर मैं इसको इस जगह पे दिखाने की कोशिश करूं, लेट्स से आई हैड 3 stations, station 1, station 2 and station 3. They were all interested in transmitting some data. Now on time axis I have shown a packet received at station A, station 1. There is a packet received at station 2. There is a packet received at station 3. Let's say at this time tau naught maybe station A received a packet, station 1 received a packet at this time tau naught. This is the time where station 1 actually senses the channel, that if it is idle or not. Channel was idle, so station A did a wait to identify. Obviously there has to be some time where we say that okay, if channel stays idle for maybe 5 milliseconds, that means the channel is idle. So that time we can call it that this is DIFS time or distributed interframe space time. We will use these times to prioritize different packets, as well as we will use this time to identify if channel is idle. Station A को पैकेट मिला है tau naught,
At tau 1, station A started transmitting the packet. स्टेशन बी को पैकेट मिला है टाउ 2, एट टाउ 3, स्टेशन 3 को पैकेट मिल गया। अब जब स्टेशन 2 को पैकेट मिलता है और इसने अपना जब DIFS वेट करना शुरू किया, तो ड्यूरिंग दिस वेट स्टेशन 2 आइडेंटिफाइड कि देयर इज सम अदर ट्रांसमिशन गोइंग ऑन, सो इट डेफर्स इट्स ट्रांसमिशन। स्टेशन 2 यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं करेगा। ऐसे ही स्टेशन 3 को जब टाइम पैकेट मिलता है और DIFS टाइम के दरमियान में स्टेशन 3 नोटिस करता है दैट देयर इज ऑलरेडी सम ट्रांसमिशन गोइंग ऑन, स्टेशन 3 आल्सो refrains from transmitting data. They both wait till station 1 finishes with its transmission at tau 4. Now is the time where station 2 and 3 can start contending to transmit data. अब अगर स्टेशन 2 भी DIFS वेट करेगा और स्टेशन 3 भी DIFS वेट करेगा, तो packets transmitted both from station 2 and station 3 may collide with each other. So here we need to introduce some collision avoidance mechanism. So we stop station 2 and station 3 from immediately transmitting a packet. So they basically perform a DIFS and there they start doing a random wait. They both think of a random number between maybe 1 and congestion window. Station 2 may find a number 6, station 3 may find a number 10. Now after 6 time units, which is this time, here station 2 can start transmitting data, and after 10 time units, which is maybe here, now station 3 can start transmitting data. Now this is the example of the same scenario we discussed before. We had 3 stations, station 1, station 2 and station 3. These are our time axis. Station 1 received a packet at this point in time. It did a wait for DIFS time to find that if the channel is idle. The channel was idle, so station 1 actually started transmission emitting packet at this point. Station 2 and station 3 also received the packets during this time. Once station 1 was done with its transmission, यहाँ पे station 2 and station 3 they both perform a random backoff. इन दोनों ने पहले अपना DIFS किया। At this point, अगर दोनों अपनी ट्रांसमिशन शुरू कर देते, as in case of CSMA CD, they would have faced a collision. CSMA CD के केस में क्योंकि हमारे पास थोड़े नोड्स थे कंटेंट करने के लिए, तो we simply allowed them to transmit once the previously sending node was done with its transmission. हमें अंदाजा था कि collisions कम आएंगी, and we were able to recover from the collisions as soon as we were able to detect them. In wireless medium, we are not able to detect collisions. So हमने वो जगह जहां पे collision आ सकती थी वहां पे avoidance ऐड कर दी है. So station 2 and station 3 did not immediately start transmitting the data. They created some random numbers. Let's say station 2 thought of a number, generated a random number 10, station 3 generated a random number 5. After 5 time units, here station 3 can simply start sending data. I think I can color it in a different color. At this loop point, station 3 starts transmitting data. Station 2 का counter जो था, that was 10 time units. Only 5 time units were consumed. 5 time units बाकी थे. Station 2 अपना countdown timer pause कर देता because channel is not idle. Countdown timer, ये एक पॉइंट है याद रखने के लिए, countdown timer तभी डिक्रीमेंट होगा जब चैनल आइडल होगा। अगर चैनल पे कोई और ट्रांसमिशन आपको सुनती है तो आप अपना जो बैक ऑफ टाइमर था उसको डिक्रीमेंट करना बंद कर देंगे, वरना स्टेशन 2 का बैक ऑफ टाइमर यहीं कहीं 0 हो जाता और स्टेशन 2 अपनी ट्रांसमिशन शुरू कर देता। अगर यहाँ पे नहीं भी करता तो स्टेशन 3 की ट्रांसमिशन खत्म होने के फौरन बाद अपनी ट्रांसमिशन शुरू कर देता। हमने एक किसी भी ट्रांसमिशन के खत्म होने के बाद लोगों को फौरन से ट्रांसमिट करना अलाउ नहीं करना है, हमने उन्हें रैंडमाइज करना है। इन ऑर्डर टू रैंडमाइज दीज स्टेशंस, we came up with the idea that we can freeze our countdown timers or our back off timers as soon as some other station starts transmitting data. Once station 3 is done with its transmissions, station 2 can again do a DIFS to find out that if channel is really idle. Now here at this point, station 2 can actually start decrementing its remaining timer. Once the timer reaches 0, here at this point, station 2 can get to start transmitting data. Any questions so far?
इसी को एक और ज्यादा एलैबोरेटिव एग्जांपल के साथ देखते हैं। वी हैव 4 स्टेशंस हियर। नाउ हमने टाइमर्स की वैल्यूज भी और डेटा वैल्यूज भी और वो सारा कुछ यहाँ पे प्लेस कर रखा है। वी नो के इन ऑर्डर फॉर चैनल टू बी आइडल एवरी स्टेशन एक DIFS टाइम वेट करता है। DIFS डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस की एक एब्रिविएशन है, ठीक है। एक खास टाइम यूनिट्स वेट करता है, वी कैन से दैट 10 मिलीसेकंड वेट करता है। अगर इस टाइम के दरमियान में से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं मिलती तो वी बिलीव के चैनल आइडल है, स्टेशन कैन इमीडिएटली प्रोसीड विद द ट्रांसमिशन। अगर इस टाइम में उसे ट्रांसमिशन मिल जाती है तो स्टेशन वेट्स फॉर द चैनल टू गेट आइडल, उसके बाद एक रैंडम नंबर जनरेट करता है और उस रैंडम नंबर को डिक्रीमेंट करना शुरू कर देता है। सो हियर इज द एग्जांपल, वी हैव 4 स्टेशंस 1 2 3 and 4. Along these time axes we can see station 2, station 1 2 3 and 4 they all receive some data. Station 3 को सबसे पहले डेटा मिला है। Station 3 performed a DIFS wait. Since channel remained idle during this DIFS wait, station 3 can immediately start transmitting data. Now if we notice, before the transmission from station 3 even started, station 1 had also received a packet for transmission. And station 1 was also doing a DIFS on the packet. Station 1 का DIFS इस पॉइंट पे खत्म होना था। उस DIFS से पहले ही स्टेशन 3 ने अपनी ट्रांसमिशन शुरू कर दी है एट दिस पॉइंट। सो स्टेशन 1 का DIFS जो है इट हैज फेल्ड एक्चुअली। स्टेशन 2 का DIFS भी फेल हो जाएगा, because when station 2 starts performing a DIFS, it immediately senses data transmission from station 3, so it cancels the DIFS wait. Station 4 also cancels the DIFS wait because it can sense a transmission from station 3. At this point, once the station 3 is done with its transmission, now we have 3 contenders, station 1, station 2 and station 4, who are actually intending to transmit some data onto this shared channel. All of these stations, station 1, station 2 and station 4, they perform a distributed interframe space wait. 1 पे भी, station 2 पे भी और station 4 पे भी एक DIFS wait होता है। After this DIFS wait, they generate a random number. Let's say station 1 generated a number 9, station 2 generated a number 5 and station 4 generated a number 7. अब ये तीनों स्टेशंस अपने इस बैक ऑफ टाइमर को, इस रैंडम नंबर को डिक्रीमेंट करते जाते हैं आफ्टर एवरी टाइम यूनिट। सबसे पहले ये 5 टाइम यूनिट्स जो थे ये 0 हो जाएंगे। सो वंस दिस बैक ऑफ टाइमर रीचेस 0, स्टेशन 2 कैन प्रोसीड विद द ट्रांसमिशन। उस टाइम पे स्टेशन 4 के 2 बैक ऑफ टाइम यूनिट बाकी थे। स्टेशन 1 के 4 बैक ऑफ टाइम यूनिट बाकी थे। आउट ऑफ 9, 5 वर ऑलरेडी elapsed. 4 backup time units were available with station 1. 2 backup time units were available with station 4 when station 2 started transmitting data. जब station 2 की transmission पूरी होती है, at this point we have 2 contenders. One is station 1 and the other contender is station 4. They both perform a DIFS. अब इस DIFS के बाद at this point अब ये नया रैंडम नंबर जनरेट नहीं करेंगे। इनका पिछला बैक ऑफ टाइमर जो डिक्रीमेंट हो रहा था वो पॉज हुआ था। दे सिंपली स्टार्ट डिक्रीमेंट देयर बैक ऑफ टाइमर। इसका एडवांटेज ये है कि बोथ स्टेशन 4 एंड स्टेशन 1 गेट प्रायोरिटी ऑफ एनी न्यू एंट्रेंट। इनके बैक ऑफ टाइमर से जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे, सो दे कैन गेट टू हैव एक्सेस टू द चैनल बिफोर एनी न्यू एंट्रेंट। सो इन दोनों ने जब अपने टाइमर्स को डिक्रीमेंट किया तो स्टेशन 4 का टाइमर जो था जल्द इट रीच 0 आफ्टर 2 टाइम यूनिट्स। एट दिस पॉइंट स्टेशन 4 स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग डेटा। इस पॉइंट पे अभी भी स्टेशन 1 के पास 2 टाइम यूनिट बाकी हैं, 2 लैप्स हो चुके हैं। तो once station 4 is done with its transmission, at this point we have only station 1 waiting for transmission. Station 1 performs its DIFS. At this time station 1 does not proceed with the transmission because it does not know कि अगर कोई और स्टेशन भी ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो। So station 1 simply starts decrementing its back of timer once this timer reaches 0. Here at this point station 1 can proceed with the transmission.
जब स्टेशन 1 अपनी ट्रांसमिशन पूरी कर लेता है तो स्टेशन 1 भी आइडल हो जाता है. नाउ इफ एनी अदर स्टेशन रिसीव्स डेटा तो वही मैकेनिज्म दोबारा होगा. एनी क्वेश्चन सो फार? सर ऐसा केस पॉसिबल है कि बैक ऑफ जिसमें दो किसी का 0 हो जाए एक वक्त में? जी बिल्कुल हो सकता है. अगर स्टेशन 1 और स्टेशन 4 ने सेम रैंडम नंबर जनरेट किया होता तो दोनों का बैक ऑफ एक ही टाइम पे 0 होता, दोनों के पैकेट कोलिजन में जाया हो जाते. ठीक है सर. ठीक है. सर लेकिन हमने कोलिजन अवॉइडेंस का एडवांटेज हमें ये हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन थोड़ी सी कम हो गई है. अवॉइडेंस में अगर आप गौर करें तो वेस्टेज ज्यादा है. ऑब्वियसली यहीं से आई कैन मेक एन अंडरस्टैंडिंग के वाईफाई जो होगा उसकी परफॉर्मेंस इथरनेट से अच्छी नहीं हो सकती. इथरनेट विल परफॉर्म बेटर देन वाईफाई बिकॉज देयर आर टाइम वेट्स. इथरनेट में ये टाइम वेट्स नहीं थे. वाईफाई में वी हैड टू इंट्रोड्यूस दीज टाइम वेट्स. ये टाइम वेट्स जो हैं इनमें चैनल आइडल है, इनमें कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही. वी आर वेस्टिंग आवर प्रीशियस चैनल. लेकिन वी हैव नो अदर mechanism to find out if other stations are also willing to transmit some data. अब उसको ढूंढने के लिए हमने फिर randomness और back off के intervals ऐड किए. सबसे ज्यादा collision आते थे जब कोई एक स्टेशन अपनी ट्रांसमिशन पूरी करके रुका होता था. तो हमने कहा कि after any station finishes it with its transmission, बाकी stations जो हैं they should not immediately proceed with the transmission. They should perform a random wait. उस randomness की वजह से there is a good chance कि वो लोगों की randomization जो है उनको एक पॉइंट पे कोलाइड ना करने दे. ठीक है. उन्हें चैनल की एक्सेस के लिए मुख्तलिफ टाइम मिलेंगे. अब मैं अगर आइट्रेट करूं CSMA और CSMA CD और CSMA CA के डिफरेंसेस को. CD was Ethernet. CD में क्या होता था? On Ethernet, CSMA CD में whenever a station received a packet, it used to sense the channel. If channel was idle, it used to immediately transmit that packet. If channel was busy, it used to defer its transmission. Wait state में चला जाता था till the channel gets idle. और channel के idle होते ही अपनी transmission कर देता था. If transmission was successful, ये assume कर लेता था कि packet deliver हो चुका है. If a jam signal was detected, by jam signal I mean if a collision was detected, सेंडर assume करता था कि collision आ गई है, पैकेट कोलाइड कर गया है, तो सेंडर यूज्ड टू डू अ बैक ऑफ. अगर दोबारा collision आती थी पैकेट में तो बैक ऑफ का इंटरवल डबल हो जाता था. इसी वजह से हमने कहा था कि CSMA CD जो है वो बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के साथ काम करता है. CA deals with the collision avoidance mechanism since we cannot detect collision. तो CA में whenever a node receives a packet, it senses the channel if it's idle. In Wi-Fi, in CSMA CA, if channel is idle, station proceeds with the transmission. If channel is busy, it waits for the channel to get idle. Once the channel is idle, now it performs a distributed interframe space wait, DIFS wait, to make sure that the channel is idle. इसके बाद ये एक random number generate करता है. It does not simply proceed with the transmission. वो रैंडम नंबर वेट करने का एडवांटेज ये होता है कि अगर मल्टीपल स्टेशंस जो थे दे वर विलिंग टू ट्रांसमिट एट द सेम टाइम तो हमने वहां पे एक रैंडमाइजेशन ऐड कर दी है. नाउ ओनली वन ऑफ दोस स्टेशंस विल प्रोबेबली गेट अ चांस टू ट्रांसमिट टू द चैनल फर्स्ट. तो वो जो रैंडमाइजेशन आ गई उसकी वजह से सब लोग एक ही टाइम पे जाके उन्होंने चैनल को इंटरप्ट नहीं कर दिया. अगर कोई भी ट्रांसमिशन चल रही है CSMA CA में तो मैं अपने बैक ऑफ टाइमर को डिक्रीमेंट नहीं करूंगा, मैं उसको फ्रीज कर दूंगा टिल द चैनल गेट्स आइडल. जब चैनल आइडल हो जाएगा उसके बाद मैं अपने बैक ऑफ टाइमर को डिक्रीमेंट करना शुरू करूंगा. तो DIFS वाज एसेंशियल. तो जो CSMA CD का जो collision डिटेक्शन पार्ट था, we replaced that collision detection part with the collision avoidance part. Any questions so far? There is one more thing left, that was the hidden terminal problem. Hidden terminal problem अभी भी रिजॉल्व नहीं होता हमारा collision avoidance को ऐड करने के बाद भी. तो हमने बेसिकली रिसीवर ओरिएंटेड सेंसिंग का कोई मैकेनिज्म लेके आना है. आई थिंक कि आज की डिस्कशन में वो हमारे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इस जो कंटेंट है स्लाइड्स का इनमें से अच्छे से गुजरें. वी विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल ट्राई डिस्कसिंग दी
the other segment जिसमें हम hidden node के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. Obviously we need to do some additional packet exchanges जिसके जरिए हम अपने जो है hidden terminal प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. If there are any queries we can discuss or we can simply close our lecture here.